Okay. So in the last lecture, we have seen like how to create the users inside the organization. Like, so last lecture, we created these 4 users. Let me go and yeah. So we created customer user, development manager, and testing. And we understand like how to create a new user inside the organization. So what are the things that at all are required before we actually create any user is like, you must have a license and you must create a custom profile. Then we also have understand like how to create the custom profiles and what is the importance of creating a custom profile, right? So see, we have we have two licenses, two different form of licenses rather. One was the Salesforce license and the Salesforce platform license. So these were the two licenses that we were having. Now, altogether, we have like 3 platform licenses and 1 Salesforce license. Now, with the use of all these licenses, 3 platform and 1 Salesforce, what we have done is we created 4 different users inside the organization. So these are the users. The development user is the first user who is holding the Salesforce license, right? The second is manager, testing, and customer. Now, these all 3 users, they are having same profile and the same license. What is the profile they are having? They are having this custom profile. What we have created is the Skyline, just a second, let me go with the profile. Yeah. So we created the Skyline standard platform user profile. Okay. Now this is the profile what all these 3 users are having. Manager user is having same profile, same license. Testing is also having the same profile and the same license. Even the customer user also have the same license and same profile. For the development user, we need to allot him the Salesforce license. So what we have done, okay, we have cloned this Salesforce license. We have cloned this standard user profile, and we have created our own custom profile, Skyline standard user. Okay. Now we also have discussed that time. Okay, first of is like why should we create the custom profiles? I mean, what is the importance? Can we assign the standard profile to any user? The answer is yes, we can do that. There is no such restriction. If you want, you could assign the standard profile also. But always remember, then when you assign us any of the standard profile, these profiles are not fully editable. It's not fully customizable. uh I mean, there are 3 important things whenever, like, if I go with this profile, system administrator, right? So this is the profile. And if I try to edit this profile, because this one is a standard profile, 3 important things are there that we are unable to edit. What are those? Administrative permission. Yeah. The first thing was administrative permission. You don't have on the standard profile, you cannot change the administrative permission. The second was general user permissions, this general user permission. And the third was like things related to the standard object and the custom object. We cannot make anything. These all are I mean, this looks like to be a read only field, है ना? यहाँ पर आप कुछ changes नहीं कर पाते हो. So this all looks like to be a read only field. So to have this control, and if we wanted to even customize this, even if wanted to make some changes over here, we should do what? We should always clone the standard profile and create your own custom profile so that you could customize everything related to that user. So these were the discussion जो अपन ने इसके पहले जब लास्ट लेक्चर्स हुए हैं हमारे, है ना, तो उसमें हमने ये सारा चीजें डिस्कस किया है. ठीक है, अब उस पर ज्यादा डिस्कशन करना मेरे ख्याल कोई मतलब की बात नहीं है. रादर जस्ट एक छोटा सा रिवीजन जो जरूरी था वो हमने ले लिया. Let's now move further. कि अब देखो, once you have been created with the user, अब users तो बन गए हैं, so let's now understand few things related to the user management. Okay, when we wanted to have a control of different sort of things of the users, so how should we have that control? Things related to the user management. I mean, these are some kind of things what we are going to learn in this topic, user management. So creating or configuring or editing the user, that have been done. I mean, how to create the new users, how to configure the users, how to log in into their ID and password, and how to set the passwords, and everything has been done. Let's now understand as a topic we have done with this. So now let's understand how to prevent a user from the login. So we have these users, right? And let me go back to the user section. Okay. So we have, if I go to this manage users and users, now we have this customer development manager and the testing. So this is the set of all 4 users that we have. Now see, yeah, these are the 4 users that we have. So for example, yeah, if I wanted to,
prevent some user so that he couldn't log in. He couldn't log in into the org. I wanted him to stop from being logged in into the org. That means I don't want the user that he should, using his ID and the password, he should log in. I don't want him to log in. What could be the reason for this? First of all, let's start discuss this. I mean, what could be the reason why we don't want anybody to log in? There could be two things, right? एक तो ये हो सकता है कि that particular user has been resigned from the organization and he's no more with us. He's not a member of the team from now onwards because he resigned. He resigned and he's being relieved from the job, something like that. So we don't have that person in the organization and he's not working with us as a team member. So this could be one of the reason कि हम उसको बोलें कि this person couldn't be logged in because he is no more with the team. He has actually resigned and we accepted the resignation. Now from last, yesterday was the last working day. From today onwards, he will no more with us in this particular project in this particular team. तो उसने log in नहीं करना चाहिए. We should prevent him. We should stop him कि वो अपना login ID और credential डाल के, passwords डाल के, he shouldn't log in. एक तो ये reason हो सकता है. दूसरा क्या reason हो सकता है? For time being, the person has taken a leave. For example, if he's a lady employee, then probably she has taken this maternity leave. For the male employees, there is a concept of paternity leave. If you know, probably, okay, if you become a father, you also, this is the concept with MNCs only, probably. So MNCs have this provision that they give you some amount of leave as a paternity leave, or it could be some reasons like you are onto the medical leave, some sort of, probably you are sick or some member of your family is sick, and so you have asked, for the next 15 days, 20 days, 1 month, I could probably couldn't log in. So for a time being only, we wanted that this person shouldn't log in because he's on the leave right now. So we don't want him to access this organization because due to some like some of the reasons related to security and the confidentiality of information, something like that. So we don't want, because this person is for the next 15 to 20 days, he's on the leave, for the next 3 to 4 months, probably she is on the leave, something like that. So if we don't want this person, so that he could, he shouldn't log in into the org. तो ऐसे दो या दो तीन रीजंस हो सकते हैं जिसमें हम ये सोचें कि यार ये जो इंसान है, ये जो पर्सन है, इसने लॉग इन नहीं करना चाहिए ना. ये कुड बी कस्टमर डेवलपमेंट मैनेजर टेस्टिंग. मैं चारों में से किसी की भी बात कर रहा हूँ यहाँ पे. व्हेन आई एम टेलिंग दिस यूजर, इट कुड बी एनी वन ऑफ देम, इट कुड बी एनी वन ऑफ देम. इनमें से कोई भी हो सकता है वो, ठीक है, इनमें से कोई भी हो सकता है. हम उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे. तो हाउ कुड वी स्टॉप अ यूजर दैट ही शुडंट लॉग इन. अब इसमें एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है. देखिए आप सभी लोग ध्यान से सुनिए इस चीज को. See, you know the steps to create a user. What are those steps? As a part, we have learned, okay, whenever we wanted to create a user, we must assign him a license. We must assign him a profile. These two things are mandatory. Although we should give him a role, even without giving the role, you could create a user. This is the only thing which is not mandatory, which is an optional part. I mean, you could create a user by giving him a role without even giving him the role, and later on you could decide कि इसको ये role देना है. तो चलो ठीक है. We say that there are 3 different steps. Whenever we wanted to create a user, there are 3 different steps. We first of all should give him a license, we should give him a profile, and we could give him a role. And then these are the 3 steps of creating a user. Now they will ask us one question in the interview. Like, what are the steps of creating a user? This is the steps. Now they will ask us, like, what are the steps of removing a user? Probably it has written. Let me interview questions. Yeah. So, probably I have written, like, what are the different steps of removing a user? How could you remove? Yeah. How could you remove? How could you delete a user from the organization? Okay. This is one of the interview question, and it's the most repeated question in the admin interview. This is the most repeated question. What are the different steps, or like, if a user is created inside the org, how will you delete that user? How will you remove that user? This is one of the interview question, and please remember this. I mean, ये बहुत बहुत मर्तबा पूछा जाता है. This is one of the most repeated question. How can you remove a user from the organization? Now they'll ask you, for example, I created a user called as customer user. Now this user is no longer with us in the organization. So he has left the organization, so we don't want him to log in. So what are the steps you could remove a user? देखो अब ध्यान से सुनो जो मैं कहने जा रहा हूँ, and write it down. That will be more beneficial. Once a user has been created inside the org,
there is no way. There is no way to remove that user. There is no way to delete that user. Once a user has been created inside the org, there is no way you can delete a user, you can remove a user. Not with this customization, nor with the, not with the this configuration, nor with the customization. That means with programming or without programming, whatever you are saying, there is no way. Even, here it is no way. यहाँ पर देख लो आप कहीं पे delete का option नहीं. Here it is no way. Not even with the programming. Programming में आप आगे चल के you are going to learn about something called as DML. DML, Data Manipulation Language. So what we are going to learn over there, मैं बताता हूँ आपको. आप DML पढ़ने वाले हो. DML में आपने कुछ statements होती हैं. Like there is a statement called as insert statement. Insert is to insert the data. What you do over here, आप यहाँ पे account object पे जाते हो. You go to the account, you press this new button, right? You press this new button, and then you enter some values over here and hit the save button. Whenever you hit the save button on the backend में what sort of coding? अब वो तो हम ध्यान नहीं दे रहे because we are onto the admin, है ना? But आगे चल के जब आप development पे जाओगे, you are going to learn this whole logic. What is working behind this page? This is front end part. This is my front end. What is working behind this front end? What is the business logic? What is working for every button, for everything? What you are going to learn. So there will be a time come when we are discussing about the DML. तो एक होती है insert statement, एक होता है update statement, एक होता है merge statement, एक होता है delete, undelete. तो उसमें सिर्फ delete है, delete. ये जैसे if you remember last time also we have seen this diagram. I told you about the objects, right? I told you one thing over there. Everything, see, whatever we are discussing, these are essential. आप भूल नहीं सकते, कुछ नहीं भूलना है आपको. लेक्चर की हर एक एक बात याद रखनी है. I told you one thing. Every user what we create are going to be stored inside one of the object called as user object. Now, for example, you created 5 users, right? And you wanted to delete one of them. And if you try to give that delete statement, वो programming के through भी अगर आप delete statement दोगे ना, तब भी आपको error आएगा. Insufficient privilege. That means we don't have any such authority that we could. Once the user has been created, एक मर्तबा जब user create हो जाए, once the user has been created inside the organization, there is no way, कोई तरीका नहीं है, there is no way, either by configuration or by customization. Configuration मतलब ये जो इस वक्त आप सीख रहे हो, something called as declarative customization, जहाँ पर आप programming use नहीं करते हो. आगे चल के जब आप कस्टमाइजेशन सीखोगे, समथिंग कॉल्ड एज प्रोग्रामेटिकल कस्टमाइजेशन, जहां आप प्रोग्रामिंग सीखोगे. So there is no way, there is no way. Make it clear, make it absolutely clear in your mind. Once the user has been created, there is no way. There is no way with this declarative customization, with the programmatic customization, whatever. There is no way with the admin. There is no way with the development also that you could remove, you could delete a user. No, Salesforce won't allow you that. Then how could I prevent with the, अब यहाँ से देखो ये क्वेश्चन की सीरीज बनती है. आप खुद समझदार हो, आप समझ सकते हो कि if you give this answer, what could be the next question. हम जोशी तो भले ही नहीं है, लेकिन हाँ हमारा mindset है ऐसा. We could predict कि why this question has been asked to us and what could be the next question after this. तो पहले तो आपसे पूछा कि how to create a user. So you will say, okay, fine. See, if you wanted to create a user, you must assign him a license. You must have a license for him. You must create a profile, rather assign a profile to him. Assigning a role is something which is optional. Even without assigning, you could create a user. Okay, fine. So in this way, I could say that there are 3 steps of creating a user. Give him a license, give him a profile, give him a role. Now, if this is the first question, what is the second question? Okay, fine. I am agree with you. Now you tell me, these are the steps of creating a user. Now tell me, what are the steps of removing a user? How could you delete a user? There you need to say very confidently. वो तुमको ना अलग अलग सिनेरियो पे डालेगा. अच्छा ऐसा नहीं है तो अपन डिलीट स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं ना, वहां पे डीएमएल फायर कर सकते हैं ना यार. चलो ठीक है, एडमिन पे तो नहीं है. एडमिन पे मैं समझ गया, आई एम टोटली एग्री विद यू कि यहाँ पे डिलीट नाम का कोई ऑप्शन ही नहीं है. लेकिन वो डिलीट स्टेटमेंट है ना अपने पास में डीएमएल वाला, उसको कर सकते हैं. अगेन यू नीड टू से नो, नहीं. इवन और वो एसक्यूएल करेंगे अपन आगे चल के. विल टेक दिस एग्जैंपल व्हेन वी लर्न दिस एसक्यूएल एंड डीएमएल स्टेटमेंट. तो अपन करेंगे वो चीज, लाइव देखेंगे उसको. अभी वक्त नहीं आया उसका, लेकिन देखेंगे.
There also, then also you need to say, no. Even with the using of DML delete statement, you cannot delete the users from the user object. नहीं कर सकते. Once he know कि ठीक है, you are absolutely confident about this fact कि भैया user बन गया तो delete नहीं हो सकता. Then he will, fire the next question. Okay, fine. I agree with you, Prajwal. I understand what you are saying. मैं समझ गया. Now tell me, yaar, Prajwal, one thing. One of the user has left the organization, and we wanted him to prevent. Okay, he shouldn't be logged in because वो अभी थोड़ी ना अपने organization का हिस्सा है. We don't want him that he should log in. आप कैसे रोकोगे उसको, Prajwal? Because you cannot delete that. तब आपको बोलना है. अब आता है यहाँ से आज का topic. See, although, yeah, this is a fact that we cannot delete the user, but then if we wanted to prevent any user so that he couldn't log in, there are two different ways to do that. What could I do? I could either deactivate him, I could either freeze him. These are the two options. दोनों करेंगे अपन, ठीक है? There are two different ways, there are two different ways in the Salesforce. Salesforce provide you two different ways that you could prevent a user, you could stop a user and he shouldn't log in. वो दो तरीके हैं. एक तरीका है आप उसको डीएक्टिवेट कर दीजिए, दूसरा तरीका आप उसको फ्रीज कर दीजिए. डिफरेंस क्या है लिखा हुआ है, मैं फिर भी बताऊंगा आपको अपनी तरफ से. बट यस, प्लीज गो विद दिस थ्योरी. आई मीन आई कैनॉट, मैं बार बार बोलता हूँ आपको कि थ्योरी पढ़ो. थ्योरी बहुत अच्छी है. आपको जो कल चल के आपको इंटरव्यू पे जो बोलना है ना, ये वही चीजें हैं यार आपके पास. आपको देखो एग्जाम नहीं देना है, ये कॉलेज नहीं है, मैं कोई कॉलेज का टीचर नहीं हूँ, मैं एक टेक्नोलॉजी पे तुमको ट्रेन कर रहा हूँ. तो कैसा है ना, ऐसा थ्योरी एक लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ सकता. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. लेकिन ये जरूरी है कि तुम लोग पढ़ो, बिकॉज ट्रेनिंग तुम्हारी चल रही, मेरी नहीं चल रही. तुमको इंटरव्यू देना है, मुझे नहीं देना है फिलहाल. तो अगले साल तो भी दूंगा, मैं स्विच करूंगा, अभी नहीं कर रहा है. तो ध्यान से सुनो इस चीज को यार, थ्योरी तुमको पढ़ना पड़ेगा. चलो, तो देयर आर टू टेक्निक्स, देयर आर टू टेक्निक्स दैट वी कुड स्टॉप एन यूजर दैट ही शुडंट लॉग इन. नहीं लॉग करना चाहिए उसने. तो एक तरीका है डीएक्टिवेट करो. The second way to do that is to freeze the user. Let's understand what is the difference between these. चलो एक यूजर पकड़ते हैं. The first is customer. उसके पहले मैं कुछ दिखाना चाहूंगा. तो let's come to the setup menu. And जो अपना यूजर वाला जो लाइसेंस वाला अपना इंटरफेस है, let's come to the company profile. कंपनी इंफॉर्मेशन में अपने को ये मिलता है, लाइसेंसेस दिखते हैं सारे कि हमारे पास कितने लाइसेंसेस है ना. तो देखो, प्लेटफॉर्म और सेल्सफोर्स और सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म, ये दो लाइसेंस के बारे में बात कर रहे हैं. तो मैं सेल्सफोर्स यूजर को डीएक्टिवेट नहीं करता, उस पर कुछ नहीं करता. मैं प्लेटफॉर्म यूजर के 3 यूजर पड़े हैं मेरे पास में. भाई आपके कस्टमर यूजर के पास में भी प्लेटफॉर्म लाइसेंस है, आपके मैनेजर यूजर के पास भी प्लेटफॉर्म लाइसेंस है, और आपके टेस्टिंग यूजर के पास भी प्लेटफॉर्म लाइसेंस है. ठीक है, तो ये तीनों में से किसी एक पर खेलेंगे आप. चलो हम कस्टमर यूजर पे खेलते हैं. Okay, so we now I could see that 3 मिले को, मतलब इस एडिशन में डेवलपमेंट एडिशन, डेवलपर एडिशन जो मैं यूज कर रहा हूँ, तो Salesforce has given me 3 platform license, and out of that 3 I consumed all 3. That means I'm remaining with 0 licenses, right? Of this type, Salesforce platform. Right now I see I don't have any license. चलो भाई ठीक है. अब डिफरेंस क्या है आओ देखते हैं. Let's first of all open this customer user. इसको ओपन करते हैं. यहाँ पे एक बटन है फ्रीज. ओके, यहाँ पर एक बटन है फ्रीज. ऐसे इफ यू फ्रीज हिम जैसे कि मैंने कर दिया, ठीक है, तो what really happens is that now this user cannot log in. This user cannot log in. Let me show you that. Let me open any of other browser, and then now this user cannot log. तो मैं यहाँ पे अब उसको लॉग इन करने का ट्राई मारता हूँ. So let me go with this login.salesforce.com. Login.salesforce.com. चलो उससे क्रेडेंशियल्स डालते हैं. फिर अपने पास उससे क्रेडेंशियल्स तो है ना. वी हैव क्रिएटेड द क्रेडेंशियल्स. कस्टमर यूजर जो है उसका यूजर नेम है ये. सो लेट मी ट्राई टू कॉपी दिस यूजर नेम. ये यूजर नेम कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, पासवर्ड डालता हूँ जो उसके पासवर्ड मैंने उस वक्त डिसाइड करे थे ना. आई एम एंटरिंग द सेम पासवर्ड. ट्राई टू लॉग इन विद दिस. डोंट सेव. Please check username and the password. If you still can't log in, please contact your Salesforce administrator. See, he cannot log in. Why? Why he can't log in? Because you have freeze that user.
ठीक है, तो पहला first thing what is the observation over here. The first thing what we observe is that, well, if we freeze any user, while if we freeze any of the user, he can't log in into the R. This is the first thing. Okay, this is the first thing. Now this person, customer user, with by entering, although you see he has entered the exactly this what I said, the correct the correct username with the correct password also. It's not like he is entering something wrong. No, 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 we are absolutely entering the correct ID with the correct password. So though by authentication it's okay, but he cannot log in because you have freeze the user. And the second thing what I wanted every one of you to observe is that, note, what about license? Let me once again refresh this. Is there any changes in the license? No, no, license still remains with him, although he cannot log in. But ऐसा मतलब नहीं कि license हमारे पास वापस आ गया. The license is still with him. We have 0 platform licenses. Now let me unfreeze him. Let me unfreeze him. चलो अब मैं उसको unfreeze करता हूँ. Now he could for sure he could log in. ठीक है, उसको अभी वो रखो साइड में. If with this credential and everything, if I now enter, he is logged in. He can log in. लेकिन मैं log out मारूंगा तो यहाँ से log out हो जाएगा. That is why I am just avoiding this phase. Otherwise, for sure he could log in. Don't worry. It's a trial and tested thing. And if you wanted, take this as an assignment. Please do that. Freeze, unfreeze, उसके ऊपर करके देखो आप, but take another browser for this. Okay, now this was what freeze and unfreeze. Now let me do I deactivate करके दिखाता हूँ. तो अभी activated है ये. Let me edit this. Let me edit this user and let's remove this उसको मैं deactivate. So it's asking, it's actually deactivating the user from all the delegated groups and something. It's just a kind of warning here. You are trying to deactivate this user. So yes, I'm sure for this. So I have done press this OK button and save this. Now this customer user has been deactivated. See, okay. I'm using my mobile's network, so it could probably the response by WhatsApp. Guys, am I audible or not? Come on. Please tell me whether I'm audible or not. Yeah, I was disconnected. Actually, I'm using my mobile's network. I'm out of city for now. By probably tomorrow, I could come back to the city, or maybe a day after that. Okay. So see, I deactivated this user for now. Okay. I deactivated this. Let's know. Am I audible perfectly? Please give me this response. Yeah, please. Am I audible perfectly? Everything goes fine? Audio, video. Okay. That means I'm clear. Yes. Fine. Thank you. Chalo. So what we have done, the second thing, I have deactivated the user. Now let me go with the license. I could see that we are now having 0 licenses, for the platform. Let me refresh this. See, 1 license has been returned to us. Which license is this? The user's customer's license. What license we have given to him? We have given him a Salesforce platform license. So it was initially consumed. When we give this license to him, this user, it was consumed. It was consumed for creating this user. But then, अच्छा, अब यहाँ पे एक observe करो. What is, if I ask you what is common between freezing and deactivating a user? What is common? What is common between freezing and deactivating a user? You freeze a user, you deactivate a user. What is common? So the common is what? This person, if I freeze him, if I deactivate him, in both of the cases, that user, he cannot log in into the org. He cannot log in into the org. So this is the way I could, I could prevent him from the login. Now, what is difference between these two, freezing or deactivating के बीच में? See, if you freeze the user, the license remains with him. उसके पास ही रहता है. It doesn't come back to you. It doesn't come back to the organization's repository, right? But when you deactivate any user, when you deactivate the user, the copy of license that was given to him, जैसे उसको platform user दिया था अपन ने ये वाले, ये customer user को जिसको अभी हमने deactivate किया, he was holding this license. That license come back to the organization repository. Now, what you could do, see, you have 1 license platform. आप ये चाहे तो वापस उसको दे सकते हो activate करने के वक्त, or either you could give this license to somebody else also. ऐसा रहता है. So now if I wanted to, okay, if I wanted to reactivate this, I must have that copy of license. ये license मेरे पास होना चाहिए.
अगर if I at all wanted to reactivate, otherwise ये एक्टिवेट नहीं होगा, because अभी तो मैंने ये लाइसेंस है मेरे पास and I have not given this license to somebody else. So for sure, I could go back, edit, and then reactivate that user. See, I'm reactivating that user and let me save this. So it will, it will initially check for the license. Do you have that copy of license? अगर है तो ही वो reactivation होता है, otherwise यहाँ पे error आ जाता है. Otherwise आपको error आ जाता है. Now because I have that license, now this person is activated. अब मैं वापस जाता हूँ यहाँ पे refresh करता हूँ, ये license consume हो जाएगा, देखो हो गया 0. So this is what the difference, this is what the difference. और ये it's a series of 3 questions. It's a series of 3 questions. Pehla question, they could ask you how to create a user inside the organization. Second, how to delete the user. You need to say there's no way. There's no way that you can delete a user. Programming के through, delete statement के through, कोई तरीका नहीं, जान लो इस चीज को. Once the user is created, it cannot be deleted for sure. There's no way by using data loader, by using your delete statement of the DML, by using any of the way from this admin module. No, there is no way. So please be stuck on your answer. Nahi matlab nahi. Once I said no, there is no way. That's it. Then they will fire you this question कि चलो ठीक है, I'm agree with you कि delete नहीं कर सकते, stop कैसे करोगे आप user को? So there are 2 ways, like you could deactivate, you could freeze them. In both of the cases, what is common? If you freeze him, if you deactivate him, in both the cases, the person, that user cannot log in into the org. The person cannot log in. Then what is the difference? Freezing doesn't returns the license. Deactivation returns the license back to the organization. Whatever the license that was given to him, it comes back to the org. Got it? So this is what done. This was something related to user management. Let's understand few more things. Let's understand few more things related to users, what we have created. So, like how to reset the password. Because see, in the last lecture, we understand like how to create the users. And the users what we have created, all these users, the users what we have created, they were getting one email onto the email ID what we have supplied. For the customer user, for every user, we have given this email ID. So at the time of creation of this user will get an email on this email ID, and with that activation link, whatever it was there onto this email, this user has been activated, and then he entered his password and everything, right? Now, for example, let's take this as an assumption कि एक हमारा user था, एक lady user था, and she has taken like 5 to 8 months of the leave due to some reasons, could be pregnancy or something like that. Now वो अभी 6 महीने 8 महीने के बाद में now she started resuming her work, बट वो पासवर्ड भूल गई अभी. वो काफी वक्त पहले उसने लॉग इन किया था, इट्स ऑलमोस्ट लाइक 6 to 8 months बैक. अब उसको याद ही नहीं आ रहा है. तो देन ही विल रिक्वेस्ट यू कि आपको एज एन एडमिनिस्ट्रेटर वो आपको रिक्वेस्ट करेगी कि आई एम नॉट बीइंग एबल टू रिमेंबर माय पासवर्ड. व्हाट वाज द पासवर्ड व्हिच आई वाज यूज्ड टू लॉग इन. Can you please reset my password? So yes, you can do that. You can do that. So what you need to do is that just open that user customer and just press this button, reset password. That's it. You need to just press this button. आपको लॉगिन करना है और आपको रीसेट कर देना है उसको यूजर को. आप ये पासवर्ड रीसेट कर दोगे तो फिर से वही प्रोसेस फिर से दोहराई जाएगी कि ये जो ईमेल है, इस ईमेल पे एक और ईमेल फायर होगा, उसके थ्रू उसी को वो एक्टिवेट कर लेगा एंड उसको फिर से पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा, and then she will be fine with everything. ऐसा. So this is how to reset the password. Simple, very simple concept. It's nothing like a rocket science. Expiring all users password. This could also one of the this is could be one of the use case. यहाँ पे आपको सारे users का एक ही बार में पासवर्ड एक्सपायर कर देना है. क्यों? हो सकता है वो बिजनेस यूनिट पूरी सस्पेंड करना है अपने को. We don't want that the group of the users to be remain on that project. तो हो सकता है ऐसी कोई रिक्वायरमेंट आ जाए जहाँ पे आपको सारे यूजर्स का एक ही बार में पासवर्ड रीसेट करना है. हाउ विल यू डू दैट? सबको सिलेक्ट करो, रीसेट पासवर्ड करो एक ही बार में. So this will actually reset everybody's password. ठीक है, ये उसको सबको अगर आपको करना है तो. और there's one more way to do that. तो वो क्या है? तो let's go with this navigation. ठीक है, one way ये सिंपल जो बताया आपको, do this और उसको एक्सपायर कर दो, रीसेट कर दो,
सबके पासवर्ड रीसेट हो जाते हैं। ये रीसेट करना था, ये दिस इज वाज एक्चुअली यही था, वो रीसेट करना एक बार में या एक ही बार में सबके, इंडिविजुअली एक का करना, इंडिविजुअली एक का करना। अगर एक का करना है तो जस्ट ओपन दैट यूजर, जस्ट ओपन दैट यूजर एंड रीसेट द पासवर्ड, दिस विल इंडिविजुअली रीसेट हिज पासवर्ड। सेकेंड वे, अगर आपको एक ही बार में सबका करना है तो जस्ट सिलेक्ट कर लो कौन कौन से हैं वो, जैसे फॉर एग्जांपल ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, दिस इज, वी वांटेड टू रीसेट एवरीबॉडीज पासवर्ड, तो बस ये बटन प्रेस कर दो, ठीक है, तो सबके एक ही बार में हो जाएंगे। दिस इज आल्सो वर्थ इट। ये था पासवर्ड रीसेट करना। अब मैं एक्सपायर करने की बात बता रहा हूँ। एक्सपायर करने का मतलब क्या होता है कि देखो, रीसेट का पहले डिफरेंस समझो। जब आप रीसेट करते हो पासवर्ड तो आपको ईमेल पे लिंक जाती है। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ एंड इफ आई रीसेट द पासवर्ड, ये मैंने रीसेट किया, ठीक है, तो ये रीसेट कर दिया, तो अब इसका पासवर्ड रीसेट हो गया। नाउ दिस यूजर विल गेट वन ईमेल, इसको एक ईमेल आएगा, ठीक है, किस पर आएगा, ये ट्रेनिंग बैच, इस पर ईमेल आएगा। वो किस लिए आएगा, ताकि वो नया पासवर्ड एंटर कर सके, ठीक है। तो 201 पे मैं जाता हूँ तो उसको एक ईमेल आएगा यहाँ पे कि आपका पासवर्ड रीसेट हो गया ना, यू नीड टू सी फिनिश रीसेटिंग योर पासवर्ड, आप अपना पासवर्ड रीसेट जो है फिनिश कर लो। सो दिस शी विल गेट, यू नो, ये लिंक विल एक्सपायर इन 24 आवर्स, ऐसा वगैरह, एंड देन यू नीड टू वंस अगेन रीसेट द पासवर्ड, आपको जो है इसके लिए पासवर्ड रीसेट करना पड़ेगा। मतलब आपको इन द सेंस वो यूजर, दिस इज व्हाट, here the user have this opportunity, you know, here the user have this opportunity that he could reset his password। उसको याद नहीं आ रहा था तो उसने बोला कि मैं, वन सेकेंड, मुझे मेरा पासवर्ड याद नहीं आ रहा है तो मुझे मेरा पासवर्ड रीसेट करना है, तो दिस इज व्हाट यू हैव डन। आपने उसका सिलेक्ट किया, उसका रीसेट कर दिया। तो अब ये मैं वो यूजर हूँ जिसको याद नहीं आ रहा था, ठीक है, तो अब मैंने अपना पासवर्ड जो है वो अपडेट कर देता हूँ, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू रिमेंबर, याद नहीं रहेगा मेरे को, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया, ये था पासवर्ड रीसेट करना, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम मैं लॉग आउट हो जाऊंगा यहाँ से, नहीं नहीं होगा, वेरी गुड यार, ठीक है। तो देखिए अभी एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम बोल रहा हूँ, एक डिफरेंस है बिटवीन रीसेटिंग एंड एक्सपायरिंग। जब आप एक्सपायर करते हो ना तो उसको कोई ईमेल नहीं जाता है। एक्सपायर करने का मतलब ये तीसरा तरीका है किसी यूजर को स्टॉप करने का। दिस इज द थर्ड वे, यू नो, वी कुड स्टॉप अ यूजर फ्रॉम लॉग इन बाय एक्सपायरिंग द पासवर्ड। लेकिन एक्सपायर जब हम करते हैं ना तो एक यूजर का एक्सपायर नहीं होता है, इंडिविजुअल यूजर नहीं होता है, एक ही बार में पूरे पूरे यूजर। मतलब मान के चलो देयर वाज अ ग्रुप ऑफ 5 पीपल दैट यू नो दे वर वर्किंग ऑन टू अ प्रोजेक्ट। नाउ दैट डिप्लॉयमेंट, वो प्रोजेक्ट का डिप्लॉयमेंट हो गया अभी, फॉर एग्जांपल अभी हमको वो बिजनेस यूनिट को यहाँ से हटा के दूसरी जगह शिफ्ट करना है, एंड वी डोंट वांट दिस यूजर्स टू लॉग इन अभी कुछ दिन के लिए, तो यू कुड एक्सपायर ऑल ऑफ देम, सबके पासवर्ड एक ही बार में एक्सपायर कर सकते हो। सो हाउ टू डू दैट, यू नो, हाउ टू डू दैट, चलो वो देखते हैं। तो गो टू सेटअप एंड देन एडमिनिस्टर, यू नो, द सेम, एंड अरे यार देखो कस्टमर में ही मेरे को लॉग आउट करना पड़ेगा यहाँ से। Now once I log out from here, I'm going to log out from every place, ठीक है। Now let's go to the setup menu. In the administer menu, you have something called as security controls. Okay, just expand the security controls. So here, there are so many things over here. Here, there's a link called as expire all passwords. See, expire all passwords. So you just require to click and save. Now, if you do that, if you do that, all of the users, all of the users, सिर्फ एडमिन को छोड़ के इसको छोड़ के बाकी ये जितने भी यूजर्स हैं सबके पासवर्ड रीसेट हो जाते हैं, सबके पासवर्ड एक्सपायर हो जाते हैं, रीसेट नहीं, सबके पासवर्ड एक्सपायर हो जाते हैं। और एक्सपायर होने के बाद किसी को भी ईमेल नहीं जाएगा, दे वोंट गेट दिस सेकेंड चांस। उसके बाद में एडमिन को जो है इसका प्रोसेस फिर से रिपीट करना पड़ता है। तो दिस इज व्हाट अ डिफरेंस बिटवीन रीसेटिंग ए पासवर्ड एंड एक्सपायरिंग ए पासवर्ड, ठीक है। तो ऑल्दो दिस इज आल्सो वन ऑफ द वे टू प्रिवेंट द यूजर, लेकिन ये इंडिविजुअल यूजर पे काम नहीं करता है, इट वर्क्स फॉर एवरीबॉडी, ठीक है। तो ये जनरली शायद ही कोई जरूरत पड़ती होगी जहाँ पे हमें पूरे के पूरे यूजर्स के लिए पासवर्ड को एक्सपायर कर देना पड़ता है, ठीक है। चलो नाउ लेट्स टॉक अबाउट टू मोर सिनेरियोस, let's talk about two more scenarios. So see, we have these users inside the organization, okay, we have these users. Now for example, let me try to log in with the manager users account, or rather ठीक है मैनेजर यूजर्स पे लॉग इन करना है। So let me try with the
manager or somebody else. Customer है क्या यहाँ? Let me try to enter the credential. Login हो रहा है क्या? Okay, email गया बोलते हैं. एक login कर लेते हैं. Let's copy this and paste it over here. Verify. Yeah. So now see, I'm on to this customers users login. Okay. Now see, customer user was doing some sort of task. He was onto a project and he was working somewhere, but he got stuck. तो उसको कुछ तो भी परेशानी जा रही इस यूजर को. And I mean he is not being able to rectify by its own, तो उसने फिर now he is asking, he's asking his admin. Who's the admin? This person is the admin. ये अपन admin है. We are the admin. Because we created this user. Customer को हमने user create किया. अब ये I mean let's take this as an assumption कि ये दो अलग-अलग windows हैं. These are two different systems. Okay. Now because this user customer was facing some of the difficulties. He's asking, he's asking the admin, okay, please solve this my difficulty. तो बट एडमिन एडमिन वांटेड टू सी द ऑर्ग और एडमिन को बोल रहा है कि नहीं मेरे को तेरे ऑर्ग के अंदर झांक के देखना पड़ेगा. Only after that I could rectify your problem, because if I don't understand what your problem is all about, if I don't understand this, how could I resolve your issue? तो यहाँ पर कैसा है अभी कि हमको ये समझना पड़ेगा कि ये जो यूजर है, this customer user, he will he will grant the permission. He is granting the permission to this admin कि ठीक है मैं आपको परमिशन दे रहा हूं. I'm giving you the permission that you could log into my org. देखो इसके दो तरीके हैं. एक तो ये है कि ये जो कस्टमर यूजर है, he could give his username and the password. ठीक है, username तो इसको पता ही होगा of course, because he's the admin, he know this is the username, है ना, ये है username, so he know the username, but password he don't know, because password तो उसने enter किया है ना, उसको यहाँ पर email आया था, and then with this email he verified everything and then he entered this, तो उसने enter किया, तो उसको कैसे पता होगा admin को? तो एक तो तरीका ये होता है कि ये administrator को अपना email ID और password दे दे. email ID मतलब अपना username और अपना password दे दे. He could do that, but this is not the right way to do this, क्योंकि किसी के साथ में भले ही वो एडमिन क्यों ना हो, आपने नहीं शेयर करना चाहिए अपने क्रेडेंशियल्स. यू शुडंट शेयर टू एनीबॉडी. आपको कभी नहीं करना चाहिए ऐसा. तो भले ही आप एडमिन को बोल रहे हो, बट देन आप एडमिन को बोल रहे हो कि आप मेरे ऑर्ग में आइए और देखिए व्हाट इज रॉन्ग विद दिस ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे कुछ दिक्कतें क्या हो रही है. बट देन यू शुडंट डू दैट. आपको अपने पासवर्ड्स नहीं देने चाहिए. तो जब पासवर्ड नहीं देंगे हम, तो फिर क्या कैसे लॉग इन करें? तो उसका तरीका दिया है सेल्सफोर्स ने. So this is something called as grant access, grant account login access. So how to do that? Let me show you. Navigations has been written, so don't worry. You need to go with this settings every day. चलो, तो अभी मैं जाता हूँ इसके, यहाँ पर user customers, and then let's go to this my settings. My settings में जाओ, ठीक है? And the my settings you need to go to personal settings. Yes, you need to go to the personals. And here is something called as grant account login access. See, once again, let me repeat the process. So you go to this, you go to my settings. In the my settings, you need to expand this personals. And in sorry, in the personal, there's an option, grant account login access. So आप इसको click करें. And here, see, there are two people who could you grant this. आप दो लोगों पे भरोसा कर सकते. One is your company's administrator, जो कि ये भाई साहब है, ये वाले, ठीक है. और दूसरा होता है सेल्सफोर्स की सपोर्ट टीम. These are the, ये दुनिया में ये दो लोग जो तुम्हारी नैया पार करा सकते हैं.
एंड इफ एट ऑल यू वांटेड टू गिव देम एक्सेस, तो आपको सिर्फ यही दो लोग हैं, इनको ही देना चाहिए. दैट इज व्हाई देयर आर टू ऑप्शन. हाँ, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर यू कुड रिमूव दिस ऑप्शन. इसकी सेटिंग होती है, मैं दिखा दूंगा आपको. इफ यू डोंट वांट कि एनीबॉडी ऑफ योर कंपनी शुड कांटेक्ट salesforce.com एक्सेप्ट यू, और ये होता है, लेट मी टेल यू दिस, whenever we create an account for anybody, we remove this option, because this is something we don't want our employees to get into direct contact with the Salesforce support people. It should, they should always be routed from a proper channel. Like, if you are my, if you are my company's employee, if probably Prajwal is a company employee, and Prajwal wanted to have, address, I mean, Prajwal wanted to get some help from the Salesforce support, so he should first mail me. वो मेरे को मेल करे प्रज्वल कि यार मेरे को ये डिफिकल्टी जा रही, प्लीज कैन यू फॉरवर्ड दिस ईमेल टू द सेल्सफोर्स. वो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करना चाहिए. सो प्रैक्टिकली मैं सही बताऊं आपको, प्रैक्टिकली दिस ऑप्शन हैज बीन रिमूव्ड. ये कैसे रिमूव करते हैं मैं सिखाने वाला हूँ. सो दैट कल चल के जब आप एडमिनिस्ट्रेटर बनोगे तो कुछ बारीक बारीक बातों का आपको ध्यान होना चाहिए. एक, यूजर क्रिएशन पे स्टैंडर्ड प्रोफाइल कभी मत देना, कस्टम प्रोफाइल देना. दूसरा, यूजर क्रिएशन के वक्त ये वाला ऑप्शन डिसेबल कर देना. डोंट अलाउ योर यूजर्स टू डायरेक्टली कॉन्टेक्ट द सेल्सफोर्स. नहीं करना. दे ऑलवेज मस्ट गो विद द प्रॉपर चैनल. और ये इसलिए भी जरूरी है, मैं एक बात बोलूं कि छोटी सी बात है, पर ध्यान से समझो. कभी कभी क्या होता है पता है क्या, घटिया इंग्लिश, घटिया ग्रामर की वजह से ना कंपनी की खिल्ली उड़ जाती है. ये भी होता है, बिकॉज व्हाट यू हैव टाइप्ड इनटू द ईमेल, आपने क्या उटपटांग इंग्लिश लिख दी, क्या लिख दिया, ड्यू टू दैट ऑल्सो ना कंपनी की आट लग जाती है. तो इसलिए भी वी डोंट वांट सेल्स फोर्स के हमारी हमारी किसी एम्प्लॉय की छोटी सी ग्रामेटिकल मिस्टेक, इंग्लिश की कम जानकारी की वजह से हमारा नाम बदनाम. सो इट शुड ऑलवेज नॉट हैपन. ये इसीलिए ना वी ऑलवेज मेक दिस थ्रू अ प्रॉपर चैनल. तो ये कैसे हटाना, ये ऑप्शन मैं तुमको सिखा दूंगा. अभी नहीं हटाया है, ये यूजर ने नहीं हटाया, दिस एडमिनिस्ट्रेटर हैज डन, इसने नहीं किया है. दैट इज व्हाई दिस यूजर इज एबल टू सी दिस ऑप्शन. लेकिन ये हटा देते हैं, आगे चल के सिखा दूंगा, डोंट वरी, आने वाला है. ओके, चलो अभी फिलहाल बात कुछ और चल रही है, मुद्दा कुछ और है. इस वक्त हमारा मुद्दा ये चल रहा है कि भाई ये जो कस्टमर यूजर है, ही वांटेड दिस एडमिन, कि एडमिन लॉग इन करे मेरे ऑर्ग पे विदाउट गिविंग दैट आईडी एंड द पासवर्ड, विदाउट गिविंग द क्रेडेंशियल्स डिटेल, दे शुड लॉग इन. तो कैसे, तो उसके लिए आप, ये यूजर ही प्रोवाइड कर रहा है कि योर कंपनी एडमिनिस्ट्रेटर को 1 दिन का एक्सेस देना, 3 दिन का एक्सेस देना, 1 हफ्ते का एक्सेस देना, 1 महीने का या 1 साल का, ये यूजर डिसाइड कर रहा है. ठीक है, लेट्स गिव 1 डे एक्सेस, 1 दिन का एक्सेस देते हैं. ठीक है, मतलब आज दे रहे हैं, कल अपने आप हट जाएगा, कल अपने आप हट जाएगा. नाउ आई वांटेड एवरीवन ऑफ यू टू ऑब्जर्व ओवर हियर. मैं ये सारा काम यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर कस्टमर यूजर के लिए. सो लेट मी टेक एन स्मॉल स्क्रीनशॉट सो दैट आई able to have this comparison later. First of all, let me close everything from here and let's go to this. Yeah, okay, so let me paste it out over here. Now you see in front of the name of the customer user, you see there's only one option added. ठीक है, ये कहाँ से लाया मैंने, this I have taken from here. ये ट्रेनिंग बैच यूजर जो एडमिनिस्ट्रेटर है, उसको क्या दिख रहा है अभी, that is what you see in front of the customer user, or rather in front of every of the user there's only one option added. दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं यहाँ पे, दूसरा कोई ऑप्शन यहाँ पे है ही नहीं. अच्छा, ये एनलार्ज नहीं होता, ये एक्सपैंड नहीं होता, इतना ही है. तो देयर इज नो सच ऑप्शन. नाउ लेट मी डू वन सेटिंग. यहाँ पे एक सेटिंग चेंज कर रहा हूँ. आई एम गिविंग दिस योर कंपनी एडमिनिस्ट्रेटर को, आई एम ग्रांटिंग द लॉगिन एक्सेस, दिस यूजर for 1 day. You could give it for 1, 3, 1 week, 1 month, 1 year. Out of that 1 day, and save it. Okay, so changes has been saved, right? Changes has been saved. Now let's go back to over here and just refresh this window. Let's see what happens. See, one option has been covered. एक ऑप्शन आ गया यहाँ पे, देखा आप लोगों ने. So now this user, see this is client, ये दूसरा कस्टमर यूजर है, इसको छोड़ो. अभी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि this user who's the system administrator, training batch user, now he have this option to log in into the customer users account. Let's log in. लॉगिन मारा, तो अब मैं कहाँ पर लॉगिन कर लिया है, कस्टमर यूजर पे.
तो आई कुड नाउ लॉग इन इनटू हिज ऑर्ग एंड आई कुड सी कि ये क्या काम कर रहे हैं या फिर इसकी क्या डिफिकल्टी है, and I'll address to his difficulty. I'll make whatever the changes and I'll log out from here. Someone mic is on. Anyways, okay, so I'll log out from here. Now problem only is that when you log out, where you are log out from everyone's account. Okay, वो हम करने वाले, so don't worry about that. Don't worry about that. ठीक है, वो तो हम करने वाले. But हाँ, important चीज जो हमको नजर आई वो ये है कि ये user का now he could log in, now he could log in into this account, and you have one more option over here. Okay, you have one more options over here. So go to the setup and the manage users and the users. See, now let me take a screenshot and you will now compare this thing. कि आप देखो अभी ये क्या difference आपको नजर आ रहा है. पहले ये कैसा था और अब ये कैसा है. ठीक है. See, this is what the difference. अभी कस्टमर यूजर के सामने में अपने को एक लॉगिन का यहाँ पे ऑप्शन नजर आ रहा है ना. We could see one login option over here. This is what I wanted you to concentrate. So now your administrator can log in. He could even log in into the customer users account. और ये कोई भी यूजर कर सकता है. दिस इज नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू द कस्टमर. कोई भी यूजर, ये सारे यूजर्स में से कोई भी यूजर डिसाइड कर सकता है कि मैं एडमिन को अपने लॉगिन अपने अकाउंट के अंदर लॉगिन करने दूं या नहीं. नाउ सी, अब प्रॉब्लम इज ओवर. अब उसका प्रॉब्लम हो गया है, तो अब हम जो है ना, अब इसको चेंज कर देते हैं. फॉर एग्जांपल लेट्स गो वन सेकंड, गो टू दिस, सॉरी, चेंज, नो एक्सेस, सेव. ठीक है. Now let's go back to over here and refresh this. अब आप रिफ्रेश करो, ये ऑप्शन हट जाएगा यहाँ से. तो ये यूजर ने, कस्टमर यूजर ने लॉगिन की एक्सेस हटा दी. तो अब एडमिन जो है यहाँ से लॉगिन नहीं कर सकता. ठीक है. तो ये किसकी साइड से हो गया? ये हो गया यूजर की साइड से. यूजर की साइड से. ये जितने भी यूजर्स हैं आपके, आपका कस्टमर यूजर, आपका डेवलपमेंट मैनेजर और टेस्टिंग, ये चाहें अगर तो वो प्रोविजनाइज कर सकते हैं, अथॉरिटी दे सकते हैं एडमिन को कि ये एडमिन भाई साहब उनके अकाउंट में, उनके ऑर्ग में लॉगिन करके देख सकता है. कौन दे रहे हैं? ये यूजर्स दे रहे हैं. ठीक है. अब चलिए हम इसको सिक्के का दूसरा पहलू पे बात करते हैं. देखो यार, एक चीज को समझो. वी आर द एडमिनिस्ट्रेटर, राइट? और आई मीन वी हैव क्रिएटेड दीज 4 यूजर्स. इनको तो हमने ही बनाया है, तो ये तो हमारे बच्चे हैं. और अब बच्चे डिसाइड कर रहे हैं कि बाप उनके कमरे में आ सकता है कि नहीं आ सकता है. बाप को आंख दिखाने वाली बात हो रही है यहाँ पे. You created this for user. These are your creations. ये आपके बच्चे हैं, आपकी औलाद हैं. And now they are deciding कि whether ये फॉरेन में, यूएस में चलता होगा, अपने यहाँ नहीं चलता. अपने इंडिया में तो ऐसा है कि बाप ने लात मारी, दरवाजा तोड़ा, सीधा अंदर. क्या कर रहे हो बेटे तुम यहाँ पे, राइट? So it's something like this के I created this user and I, as an administrator, I created all of them. Now they are deciding कि whether I should log in into their org or not. ये डिसाइड करेगा. अभी इसकी इतनी मजाल, मतलब ये मुझे अगर कंट्रोल देगा तो मैं एक्सेस करूंगा इसका अकाउंट, अदरवाइज आई कैन नॉट एक्सेस. No, this shouldn't be happen because I am the admin, I am the creator of all these 4. बाप होता है बेटा. तो ठीक है, चलो. अब मैं क्या करता है, एडमिन लेवल पे एक चीज सिखाता हूँ, बड़ी मजेदार चीज सिखा रहा हूँ. अभी देखो, थोड़ा सा एनोटेशन हटा देता हूँ. ठीक है. अभी एक बहुत बड़ी मजेदार चीज बता रहा हूँ मैं. उसके पहले एक छोटी सी सेटिंग है, वो मैं कर देता हूँ, उसके बाद में बताता हूँ. ये जो हम बार बार लॉग आउट हो रहे हैं ना उसको, तो हाउ टू प्रिवेंट फोर्स री लॉग इन आफ्टर, है ना. तो ये जो बार बार लॉग आउट हो जा रहे हैं, तो मैं एक छोटी सी सेटिंग है वो कर देता हूँ, फिर एक चीज सिखाता हूँ. सो लेट्स गो टू दिस. ये नेविगेशन है पूरा. सिक्योरिटी कंट्रोल्स पे जाइए, सेशन सेटिंग्स पे जाइए. सो सिक्योरिटी कंट्रोल्स एक्सपैंड करो और सेशन सेटिंग्स, शेयरिंग सेटिंग, सेशन सेटिंग्स, यहाँ चलते हैं. यहाँ जाने के बाद में सेशन टाइम आउट, फोर्स लॉगिन, यहाँ पर एक है फोर्स री लॉगिन आफ्टर लॉगिन एज ए यूजर. ये चेक्ड है, इसको अनचेक कर दो. ठीक है. फोर्स री लॉगिन आफ्टर लॉगिन एज ए यूजर, वो इनिशियली चेक्ड था, उसको मैंने अनचेक कर दिया. बाकी ठीक है, बाकी जरूरत नहीं है. लेट्स सेव दिस. ओके, चलो. बस ये छोटी सी एक सेटिंग थी जो कर लेना. मतलब ये लिखा हुआ है यहाँ पे, सब कुछ लिखा हुआ है.
गो टू सेशन सेटिंग, गो टू सेशन सेटिंग्स, अनचेक दिस फोर्स री लॉगिन, ऐसा। उसके बाद अब मैं आपको एक बहुत ही मजेदार चीज सिखाता हूँ एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, कि आप क्या कर सकते हो। लॉगिन एक्सेस पॉलिसीज नाम से, go to setup, go to administer, again in the security control, ठीक है, again in the security control there is an option called as login access policy। सबसे पहले ढूंढ के निकालते हैं, चलो यहाँ पर ही, ठीक है, यहाँ पर ही there is a setting login access policies under this security control। security control कहाँ पर है? administer, administer में जाओ, expand करो security control, और यही कर रहे हैं अभी हम यहाँ, ठीक है। तो वहां पर एक है आपका login access policies, login flows के बाद में login access policies, just click on this, ठीक है, just click on this। दो ऑप्शंस है, सेटिंग, सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। पहले सेटिंग सीखो। एडमिनिस्ट्रेटर्स कैन लॉग इन एनी यूजर, लॉग इन एनी यूजर। बिफोर दैट लेट मी शो यू समथिंग। यूजर्स में चलते हैं, एक बार यूजर्स में चलते हैं, और बस बस इसको ऐसे ही ओपन छोड़ दिया, कुछ नहीं किया, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर्स कैन लॉग इन एज एनी यूजर्स, इनेबल्ड, इनेबल्ड, ठीक है। क्या चेंजेस आते हैं बताता हूँ मैं। बट बिफोर दैट देखो, आप सपोर्ट के लिए आप सेल्सफोर्स को कांटेक्ट कर सकते हो या नहीं, ये आपके ऊपर है। अभी ये सेटिंग इनेबल थी, ये सेटिंग इनेबल थी, इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन नजर आ रहा है, ठीक है। नाउ लेट मी शो यू, इसको मैं अवेलेबल ओडमी टू द एडमिनिस्ट्रेटर्स, ये ऑप्शन कर देता हूँ। ये भी चेंज किया मैंने, इसको भी इनेबल्ड कर दिया है। दो चीजें की यहाँ पे मैंने, इसको इनेबल किया है और इसको दिस कॉन्टैक्ट टू सपोर्ट से सेल्सफोर्स सपोर्ट अवेलेबल टू द एडमिनिस्ट्रेटर्स, अवेलेबल टू द यूजर से हटा दिया एंड सेव इट, चेंजेस हैज बीन सेव्ड। चलो, दो फर्क पड़ता है, दो जगह फर्क पड़ता है। यहाँ रिफ्रेश करके कुछ दिखाता हूँ। व्हेन आई रिफ्रेश इट फ्रॉम हियर, गया, ऑप्शन गायब हो गया, ऑप्शन गायब हो गया, ठीक है, वो ऑप्शन ही गायब हो गया आपका। नाउ दिस पर्सन कैन नॉट इनेबल दिस, किसी को नहीं बता सकता सपोर्ट, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या हुई, दूसरी चीज क्या हुई, यहाँ दिख रहा है अभी आपको ऐसा। नाउ लेट मी जस्ट रिफ्रेश दिस। कस्टमर के आगे लॉगिन, डेवलपमेंट के आगे लॉगिन, मैनेजर के आगे लॉगिन और टेस्टर। अब आप एज एन एडमिनिस्ट्रेटर नाउ यू कुड लॉग इन इनटू एनीबॉडीज अकाउंट, और जब आप लॉग आउट करोगे तो बाहर नहीं आओगे, बिकॉज मैंने सेटिंग चेंज करी है। तो मैंने कस्टमर के इसमें लॉगिन किया, कस्टमर को पता भी नहीं है मैं उसका अकाउंट देख रहा हूँ, ठीक है। एंड आई लॉग आउट फ्रॉम हियर। अभी मैं लॉग आउट नहीं होगा, डोंट वरी, मैं वापस अपनी लॉगिन पे आऊंगा। देखो अपनी लॉगिन पे आया, ठीक है। डेवलपमेंट यूजर क्या कर रहा है, लॉगिन करूंगा डेवलपमेंट यूजर के अकाउंट में, विदाउट नोइंग, विदाउट डेवलपमेंट यूजर को पता चले बिना, मैं उसका सारा अकाउंट चेक कर सकता हूँ। व्हाई? बिकॉज आई एम द एडमिनिस्ट्रेटर। बापू में इनका लॉग आउट किया, बाहर आ गया, अपने अकाउंट पे आ गया, मैनेजर यूजर लॉग इन किया, देख लिया। सो दिस इज द वे, यू नो, दिस इज द वे you could track your users. So if you wanted, you know, if you wanted to put some custody, if you wanted to put all these users into your custody, then always enable this option, so that you could at any instance of the time you could log in into their org and you could see what these guys are actually doing, right? This is what the power of Salesforce administrators. Now these people don't allow us, ये नहीं डिसाइड करेंगे कि हम इनके org में देखें या ना देखें, उनसे तो हमने ऑप्शन ही गायब कर दिया, ऑप्शन गायब नहीं है, उनको ऑप्शन मिलेगा ही नहीं। वो they cannot allow us, they cannot grant us the login access, rather it's me as an administrator who will decide कि मैं किसके अकाउंट में देखूं और किसके में नहीं देखूं, ठीक है। तो दिस इज समथिंग कॉल्ड एज लॉगिन एक्सेस पॉलिसी, सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द यूजर सेटिंग, ठीक है, दिस इज आल्सो वन ऑफ द यूजर सेटिंग। नाउ आई वांटेड टू हैव अ डिस्कशन अबाउट दिस सेटेड ऑडिटर्स, तो थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करना है, इसलिए आज मैं इतना ही स्टॉप करता हूं, और कल प्रोबेबली थोड़ा सा, अच्छा मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करने